Well, first up, the atrocities that have been committed by Hamas has not only left the entire world in shock, but has also cost lives on both sides of the border. Well, Israel has been claiming that over 1,500 people have been killed so far. The Hamas-run Gaza Health Ministry put up the death toll of over 8,000. However, many have been backing in India continue to criticize the Israeli government for their self-defense to terror. They continue, however, to remain silent on Hamas's brutality. ये जो दोहरे नक्शन देखे जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहीं पर जहां तक देखा गया था कि केरला सरकार की तरफ से जो मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे वहां पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और हमास को किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, एक स्टेज दिया गया था, तहां तक जो हमास का एक स्पोक्स पर्सन था जो आतंकी बताया जा रहा है उसको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि वो अपनी जो बात है वो सामने रख सके। और वहां पे जितने लोग बैठे भी हुए थे स्टेज पे वो हमास की तारीफ करते हुए नजर आए। ग्लोरियस कहा गया था वो जो पूरे अटैक को जिस तरीके से जो बढ़ता हमास के आतंकियों की तरफ से दिखाई गई। वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट द एडिटोरियल दैट हैज बीन पेन्ड बाय सोनिया Gandhi, 99.9% of which speaks of the devastation in Gaza, while devoting only 2 lines to Israel's misery. But here is why those who have rolled out a red carpet to Hamas must think twice. Even those who have seen Hamas up close in person and worked with them in the past warned that this group is not about fighting for their country, but it is only fighting for their personal interests. That they are in denial, and I'm not surprised that a majority of people can be in denial. You know, about 100 years ago, the Nazis started their movement as a point of view. It was a political idea. Then it transformed. It infiltrated the churches, it infiltrated the institution of the country, and within 5 years, they were gassing people in chambers and killing millions of people, including Jews. That led to World War II. And today, we are not that far. A majority of people, they can be emotional, and they can be projecting or inflicting emotional pain motivated by hatred on a minority, religious minority, which is the Jewish people. And you know what's in common between pre-World War II and today? That we allowed killing the Jews as they were just basically minding their business in their homes, in their farms, taking care of their life, living life. And if we to be silent, the Holocaust is not about how many people die, it's how they were killed, it's how they were annihilated and why, what motivated those terrorists to do that. So if the world in the West and in the East, if we choose to be silent and to take the side of the predator, we are not far from self-destruction. We are not far from World War III. Not Hamas, not ISIS, not Islamic Jihad, not Al-Qaeda. Islamists must die forever. This is it. This is the final war against Islamists, and we have to win this war. Israel is at this front. Okay, Israel is at this front, and we should not leave them alone. We have to stand behind them. This is not about nationalism. Israel is fighting on our behalf. Hamas' objective is not to build a Palestinian nation. Hamas' objective is to destroy the state of Israel. Their charter, their constitution say the destruction and the annihilation of the Jewish people. 10 million people live in Israel. They want them relocated so they can build their Islamic state. And they are not willing to compromise. This is not a political movement that you can sit down and reason with them and rationalize. तो आप जिसे सुन रहे थे अपने स्क्रीन पर ये मुसाब हसन यूसुफ है। ये बताया जा रहा है कि बेटे है शेख हसन यूसुफ के, who was one of the founding members of Hamas itself. Now the duplicity is what that we talk of, and we point that out. Because here in India, those who are silent on terror, even back Hamas, are they really getting the message? Because it's been over 4 days now since Hamas spokesperson, yes, an actual spokesperson of the Hamas, that was allowed to deliver a virtual lecture to a gathering in Kerala. Even as we speak, no action that has been taken against the organizers who didn't just give a free run to Khalid Mashal,
but also themselves gave incendiary speeches speaking of the 7th of October attack as a beautiful and a glorious one. Instead, what they have done is to actually book a Union Minister, Rajiv Chandrasekhar, for questioning the Kerala blast, leading to the opposition ask exactly what are your priorities? This issue of this bomb blast is being utilized by the state government to raise allegations against BJP and in particular against Sri Rajiv Chandrasekhar. That the Kerala has become such a vulnerable place where an individual can go and indulge in such terrorist acts. It's a failure of the law and order mechanism. It's a failure of the state police and the home ministry of the state. And so what are the steps being undertaken by the state government? On the one hand, they take no action against the organizers of the rally, which was held in support of Hamas. On the other hand, Rajiv Chandrasekhar, a union minister, is booked with a false case. This is not the first time Kerala government under the left has exhibited such tendencies. They give a free run to radicals. This is the double standards and hypocrisy of the state government. This move only helped to make the radical forces happy. I am wondering why the state government is not taking any case against those who conducted a rally and participated Hamas leader in Malappuram. No case against them. Rajiv Chandrasekhar ji only questioned this stand. Vote bank politics is behind this. The state government is trying to mobilize the ulterior forces, the radical forces before the election. It is only for vote bank politics. We strongly conduct, legally and politically we fully fight against. അതിനകത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ യുവജന വിഭാഗമാണ് സോൾഡാരിറ്റി വിങ്. അവരുടേതായ ഒരു പരിപാടി മലപ്പുറത്ത് നടന്നിരുന്നു. ആ പരിപാടിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന പാലസ്തീനിയൻ പോരാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതാണ്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി ചോദിച്ചാൽ പോലീസ് കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല. എല്ലാ സംഘടനകളും ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ അനുമതി കൊടുക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള അനുമതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ഈ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും നടക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെതായ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി കേസെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കലാണ്. അവരെ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല. പാലസ്തീന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും നിന്നിട്ടുള്ളത്, രാജ്യം നിന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. അത് വേറൊരു ഭാഗം. ഞാനിപ്പോ അതിലേക്കല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതില് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയും നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അത്ര മാത്രമേ അതിൽ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. BJP without communalism, BJP born in communalism, is live in communalism and will die in communalism. Communalism is their faith, philosophy and guide. And all their ministers and leaders only express venom against the minorities. So whenever they get a chance, they use the venom against minorities. His minister, Chandrasekhar, did this such a condemnable thing. What he said? They are creating communalism in Kerala. RSS is one of the major force which is communalizing RSS policy, where all Christian, Muslim and Hindu unitedly living for years. RSS is one of major force to create communalism there. इसी पर चर्चा करते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस तुषार गुप्ता, सीनियर एडिटर स्वराज, हमारे साथ जुड़े हुए. गुड मॉर्निंग तुषार. अतीकुर रहमान, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ आज सुबह जुड़ गए. गुड मॉर्निंग अतीक जी. तुषार, ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या मजबूरी रही है इतनी पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की जो सामने आकर आतंकी संगठन जिस तरह का हमास है और इतनी बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आ रही है उनके समर्थन में उतर रही है? बिल्कुल समझना बहुत मुश्किल है कितनी बर्बरता के बाद भी कोई हमास के पक्ष में कैसे बात कर सकता है. मैं पहले दिन से 10 अक्टूबर से जब से लोग हमास का एक केस पेश करने लगे हैं, जब से एक प्रो हमास स्टांस लेने लगे हैं कि देखिए इजराइल में जो हुआ बुरा है, पर आप हमास पर या गाजा पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते, लोगों को ये समझ
समझना होगा कि हमास पैलेस्टीनियन पीपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर आज एक 2 स्टेट सोल्यूशन रहता, उससे पैलेस्टीनियन पीपल भी बेनिफिट करते, वहां के लोग इजराइल के लोगों के साथ काम भी करते हैं। वॉर से पहले 15-20 हजार पैलेस्टीनियंस हर रोज इजराइल जाके काम करते थे, मीनियल लेबर में एंगेज थे, काफी तरह के काम करते थे। पर लोगों ने भारत में पता नहीं ऐसा क्यों मान लिया है कि हमास पैलेस्टीनियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है। और एक बहुत सिंपल सी बात है जो सबको समझनी होगी, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। आतंकवादियों को परवाह नहीं होती कि आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। अगर वो बर्बरता पे उतर आएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट के हैं, आप राइट के हैं, आप डेमोक्रेट हैं, आप रिपब्लिकन हैं, उनको सिर्फ बर्बरता बढ़ानी है। पर भारत में ऐसा लगता है लोगों में कोई अलग तरह की अवेयरनेस है, या दे आर नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी। सर, हमास के लिए इतनी सहानुभूति क्यों सर? Why isn't Hamas being called out for the terror activities that it has been indulging in? Of course, who better to know about Hamas than an insider? मोसाब हुसैन यूसुफ के अभी हमने रिएक्शन सुना सर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने टाइम्स नाउ को दिया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमास का सिर्फ एक मकसद है, आतंक फैलाना। Is that for me? Yes, sir. Well, then I would like to ask Tushar. First of all, I should clarify that we are not supporting Hamas. We are supporting the Palestinian cause, which the Indian stand to. तो सर, हमास का आतंकी लाइव लेक्चर क्यों दे रहा था केरल में सर? You know, answer the question. हमास का आतंकी लेक्चर क्यों दे रहा था सर केरल में? Yes, I'm coming to that. Because the Indian government yet has not banned this one, Hamas as a terrorist organization. What makes the Indian Is it a peaceful organization then, sir? तुषार, ये कोई बात का तुक बनता है कि if it is not been banned as a terror organization, तो क्या वो peaceful organization बनता है और वहां के आतंकी लाइव लेक्चर दे सकेंगे हमारी जमीन पर? तुक बनता है। यही बात आ जाती है बात पे घूम फिर के विवेक पर कि आपकी समझ क्या, आपकी सूझबूझ क्या है। क्या पूरी दुनिया को ये नहीं पता 7 और 8 अक्टूबर को हमास ने इजरायली लोगों के अगेंस्ट क्या किया? जिस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास ने सबसे पहले अटैक किया था, वहां सिर्फ इजराइल के लोग नहीं थे, वहां भारत के लोग थे, वहां हर नेशनलिटी के लोग थे, अमेरिका के लोग थे। अतीक जी, does Hamas represent the Palestinian cause? 30 seconds, please. No, it does not represent the Palestinian cause, and that's why I say, show me one clipping of a Hamas leader being bombarded, a Hamas location being bombarded. What the Zionist lobby is doing is bombarding hospitals. They have killed 8,000 children, 8,000 women. Sir, children, women, elderly, both sides that have been killed. And the brunt that has been received by anyone is the civilians at the end. However, you cannot be selective when you called out the atrocities that is being committed by a terror organization just like Hamas. Who is this Hamas? Who is this Hamas? Who is being bombarded? Who is being killed? It's the civilians. It's being non-combatants. For God's sake. चलिए, ये डिबेट आगे बढ़ती रहेगी। तुषार, अतीक जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। So amid the ongoing Israel